केम छो यूट्यूब मजामा। अभी बज रहे सुबह के 8। भाई भयंकर धूप हो गई है। मैं और मेरा एक रूममेट बाबू जा रहे हैं हम एक कॉन्फ्रेंस में। बाबू ऑलरेडी आगे निकल चुका है, इसलिए मैं फटाफट जाता हूँ। हमें एक बस पकड़नी है यहाँ से डेट्रॉइट तक की। आज का काफ़ी एक्साइटिंग व्लॉग होने वाला है क्योंकि द कॉन्फ्रेंस इज़ प्रीटी ह्यूज। इट इज़ अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल रिलेटेड एवरीथिंग, सो इट बी अ गुड थिंग। या भाई पूरे फॉर्मल में हम रेडी होके जा रहे हैं। सो बस में मिलते हैं, अभी मेरे को भागना है। सो फाइनली गाइस हमें बस मिल गई। बस नंबर 261 डियरबॉर्न ट्रांजिट सेंटर से डेट्रॉइट सिटी तक जाती है। एक्चुअली अभी जहाँ जिस स्टॉप पे हमें उतरना है वो अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। वो जैसे जैसे स्टॉप्स क्रॉस होंगे वैसे वैसे आएगा। वो एक्चुअली हमें पकड़नी थी 8:40 वाली बस, पर वो पता नहीं क्यों कैंसिल हो गई, तो हमें डियरबॉर्न ट्रांजिट सेंटर जाके 9:15 वाली बस पकड़नी पड़ी। बट एनीवेज फाइनली मिल तो गई। नाउ लेट्स गो टू डेट्रॉइट। यार मैं सोच रहा था आज का ऑलमोस्ट अपन पूरा व्लॉग है ना फर्स्ट पर्सन व्यू में रखेंगे। क्या है, मैं आपकी स्क्रीन पे रह के कुछ फालतू बातें बोलता रहूँगा, मेरी शक्ल देख के आप क्या करोगे? इससे तो आई विल शो यू व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, बिकॉज दैट इज़ फार मोर एक्साइटिंग एंड ऑब्वियसली मच मोर ब्यूटिफुल, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अबाउट एक्सपीरियंस राइट। सो लेट्स एक्सपीरियंस इट टुगेदर। तो यहाँ पे आने से पहले ना अपन डेट्रॉइट के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करके आए हैं, तो जब तक अपन डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं तब मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ उसके बारे में। डेट्रॉइट मे नॉट बी अ पॉपुलर प्लेस टू विजिट व्हेन समवन कम्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स, बट यहाँ पे देर आर थिंग्स टू डू एंड यू नो प्लेसेस टू विजिट इफ़ यू कम हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट्रॉइट इज़ द ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स या वर्ल्ड्स ऑटोमोटिव कैपिटल है, पता नहीं, बिकॉज द थिंग इज हेनरी फोर्ड started the automotive assembly line with the world's first mass produced car, that is the Model T, Ford Model T. So this became quite a unique place, you know, and you might have heard of the Motown musical style. It is actually, you know, named after a recording company that was based in Detroit called Motown. So that is a very famous musical style because it was renowned for the music performances and the performers featuring the Supremes, Stevie Wonder, Smokey Robinson and और भी थे यार, मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं अभी, पर हाँ। There is an island oasis sort of a thing called Belle Isle in Detroit that is one of a popular attraction for the residents of Detroit, especially in summers. बिकॉज वहाँ पे बहुत एडवेंचर एक्टिविटीज़, वॉकिंग, बाइसिकल राइडिंग, रनिंग, जॉगिंग, फिशिंग, हाइकिंग, everything happens in one place, so it is quite a popular destination. The other thing is a theatre called Fox Theatre. It is one of the most iconic theatres in Detroit because वहाँ पे काफ़ी सारे events and iconic performing arts, musical performances, ये सब कुछ होता है। That is a one good attraction. और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी बट those were okay, इसीलिए शायद डेट्रॉइट इज़ नॉट अ पॉपुलर प्लेस टू विजिट, यू नो। यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें, यहाँ पे आर्ट्स, म्यूजियम्स, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटी प्लेसेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। ओके सो थोड़ी देर में अभी अपना स्टॉप आ जाएगा। वॉशिंगटन एंड फोर्ट SW इज़ द स्टॉप वेयर विल बी गेटिंग ऑफ। फिर वहाँ से हम वॉक करके हंटिंगटन प्लेस जाएंगे, दैट इज़ द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस। So yeah, so we just got off the bus and we are in the downtown area of Detroit. Wow, this is beautiful. हमें बस ये फुटपाथ के एंड तक जाना है एंड देयर विल बी आवर वेन्यू होपफुली। यहाँ से दिख तो नहीं रहा है पर हम गूगल मैप्स यूज़ करके जा रहे हैं, अभी देखते हैं। हाँ, और रैपिड TCT, it's written there. Rapid TCT, it's written there.
So guys, welcome to Rapid Plus TCT 2022. This is North America's largest and the most influential additive manufacturing event. तो अपन अभी फटाफट अपना बैज ले लेते हैं and we'll then go to the arena where there are more than 300 exhibitors portraying their technologies related to additive manufacturing and 3D printing. So चलते हैं फटाफट. It is still a time-consuming process, right? You know, all these automotive components that you're seeing are 3D printed. ये सारे components जितने भी दिख रहे हैं ना, सब 3D printed है with different materials. Be it metal, plastic, PLA, PEEK. I don't know अगर आपको इन materials के बारे में पता है कि नहीं, पर yeah, it's very very impressive. Jet fusion. Okay, now this is one huge 3D printer. It is printing LSAM, that is large scale additive manufacturing. Wow. सो हम जस्ट अभी कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन ख़त्म करके बाहर आए. यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल पार्क सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड अच्छी जगह है, तो सोचा हम थोड़ी देर बाहर घूम लेते हैं एंड देन वील हेड बैक होम. व्हाट? डैम, राइट अक्रॉस द रिवर इट्स कनाडा, इट्स द सिटी ऑफ विंसर. और आपको मैं थोड़ा जूम इन करके, दैट्स द कैनेडियन फ्लैग. हेलो कनाडा, हाउ आर यू? 1 hour later. Babu, how was today's event? It was nice, Mhm. except lunch. Lunch was a disaster. Disappointed. Damn. It's a beautiful path, na? There's a river besides. That is not visible right now. Yeah, there it is. So guys, we just got off the bus at the Dearborn Transit Center. हम वापस डियरबॉर्न आ गए. प्लान ऐसा था कि हम कैब बुक करके पहले घर जाने वाले थे, पर कैब वाले ने भयंकर धोखा दे दिया, आधे घंटे तक आया ही नहीं. सो वी डिसाइडेड दैट वील टेक दिस ट्रेल बैक टू द यूनिवर्सिटी. वहाँ से हमारी शटल चलती है, दैट विल ड्रॉप अस बैक होम फ्री ऑफ चार्ज. एंड ये ट्रेल बहुत सुंदर है, सो एन्जॉय.
Nice. It'll be so fun to cycle here, na? Yeah. Cycle or scooter or like that guy running. What are you doing? So we've reached the university, but still we've got a long way to walk for the bus stop. Yeah. Do you think we'll make it in 10 minutes? Yeah. Oh, nice. पूरा बस स्टॉप पहुंच गए फाइनली आ गई. A few moments later. भाई तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं. इट वॉज अ प्रीटी डिसेंट कॉन्फ्रेंस. लंच ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया यार. सिर्फ पिज़्ज़ा खाने को मिला, इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया, और पिज़्ज़ा भी ढंग का था नहीं. सो इट वॉज अ गुड डे. अभी भयंकर थक गए, घर भी ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, तो वी आर डन फॉर द डे. ऑलराइट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो.